My name is Harpreet Kaur Parihar. I belong to Guna, Madhya Pradesh. I have completed my schooling from Vandana Convent School in Guna, Madhya Pradesh. Thereafter, I have completed my graduation in law from Bharati Vidyapeeth New Law College, Pune. And recently, I have also completed my LLM in criminal law. And my hobbies are playing basketball and brisk walking. Basketball and Brisk walking. brisk walking. Um, can you please highlight the difference between uh, pastime and hobby? What's that? Uh, आप क्या हॉबी एंड फेवरेट पास टाइम के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं? Sir, hobby basically means what a person likes to do. When he is bored of his normal life, and whereas the pastime means when he is doing something for fun or not normally he is doing that thing that he uses that as a pastime only. So when he is bored, basically. आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में डेफ में यू Yes, मेंशन द सेम हॉबीज, yes, sir. तो उसमें ये भी लिखा रहता है कि कोई ऐसी हॉबी जो आपके सिलेक्शन में सहायक हो, तो Yes. how come basketball and brisk walking will help in your selection as a civil judge in Madhya Pradesh? Sir, playing basketball has contributed to my overall growth. I have physically improved a lot, and there is, sir, mentally also I've improved a lot by playing basketball, sir. I've developed qualities like, sir, coordination, leadership qualities, decision making abilities I have improved. And whereas, sir, by brisk walking, my cardiovascular health has improved, and sir, I have been able to perform physically well, sir. By brisk walking, sir, a regular physical activity of mine is maintained, so I perform good in studies, and it helps me to retain better. ठीक है. What was your topic of the dissertation in LLM? So my topic was neurocriminology and impact of neurocriminology in criminal behavior analysis with respect to India. What is neurocriminology? Yes, sir. So neurocriminology is basically a subset of criminology itself, and it uses techniques like neuroanalysis techniques, basically, sir, BUS profiling, etc., and fMRI techniques, etc., to study the brain and biological and other physical activities and of the person which are related to the crime. What was the hypothesis of your dissertation? Well, my hypothesis regarding visitation was neurocriminology can severely impact criminal behavior analysis in India if the legal and the ethical constraints regarding neurocriminology in India are met. And what were the landmark cases which you dealt with while like covering your dissertation topic? Sir, my landmark cases which I dealt with was one was the Aditi Sharma versus Union of India, where BOS profiling was first used, and then sir, other case was of Nithari murder killings, and sir, one case was of Nupur Talwar. And so the recent case of Amlesh Kumar versus State of Bihar, where the doctrine regarding to What were your neurocriminology and findings with respect to Arushi Talwa murder case? the findings were that these evidences are not conclusive, and basically such evidences cannot be used as a conclusive, and they do not form the requisite basis for proving the guilt or innocence of the persons, and they are not 100% backed by the science. So there are errors in these techniques, Okay. basically. So, as per your hypothesis, the result of your research was that this is not a supportive piece of evidence in the courtroom. Sir, basically, what I concluded is if there are some resource constraints and legal constraints like admissibility issues are there, if they are changed and they are somewhat met with respect to India, then it can prove effective. Otherwise, it cannot, because sir, the admissibility procedure in India is quite not with respect with mark to the neurocriminology. Okay. And did you make any comparative study with any other jurisdiction? Yes, sir. With respect to USA and United Kingdom, I made comparative And studies. how is The, it the rule of evidence different in UK and India?
Sir, in United Kingdom, so with respect to neurocriminology, I have to explain. Yeah, BOS profiling and all. Yes, sir. So basically, they use this procedure with rehabilitative sentencing. They have tie-ups with organizations with work with neurocriminological testing the neurocriminological basis of the people, and they are basically using this to rehabilitate the person with according to his needs and biological needs, sir. But in India, this is missing. Okay. So, are they more used for rehabilitation or arriving at a conclusion with respect to conviction or acquittal? Sir, Is it a part more of a sentencing basically in or UK, they are not using it as a basis. no? I'll rephrase my question. Is it a part of sentencing or decision making? No, sir, it is a part of sentencing, not decision making. So they are in USA, they use it for the purpose of decision making, but not in UK. What is sentence hearing and how do we follow sentence hearing in India? So basically, sentence hearing means where a person is found guilty and he has been provided imprisonment or fine. That is basically a sentence And hearing. where can we find this provision in CRPC or in Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita? So sentencing the offender. So after the trial is completed, then a person is sentenced. It is different with respect to sessions court and Um, my question is like when we talk about sentence hearing, like what is the procedure that is to be followed? Like once the judgment is pronounced of conviction or acquittal. So if it is mm, acquittal, then there is no question of sentence hearing. But if it is of conviction, then do we proceed with the sentence hearing at the same point of time, or we generally adjourn the hearing? And if we adjourn, then how much time do we have to assess how much the quantum of sentence is to be pronounced? but sorry, I'm not aware with this version. Okay, no issues. Um, what are your views with respect to death sentence? So can I take 2 seconds? Yeah, sure. Sir, in my opinion, death sentence is constitutional and it should be as a taken as a form of punishment, sir, because there are some hardened criminals and habitual offenders, and to punish them, so death sentences should be used. So if death sentences are done away with, we cannot we won't be able to maintain justice in this justice and peace in the cases where sir the victim needs justice, and sir in cases like sir murder, be it rape cases, sir, where sir aggravating circumstances are present, and sir where grave form of or very much violence is used, sir, there I think sir death sentences should be given. But in cases where rehabilitation can be done or simple imprisonment or victim imprisonment can do the things, so their death sentences I think should not be provided. So sir, in my opinion, death sentences should be taken as a form of What is a punishment. crime test and criminal test? And from where did we get this crime test and criminal test? I'm sorry, I'm not aware. Have we gone through the Constitution of India? Yes, sir. Okay. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन जहां पे neither the parliament can discuss the proceedings of the court nor the supreme court can discuss the proceedings of the parliament. Sir, it has been provided under Article 121 and 122, if I'm not wrong. What is repugnancy? Sir, repugnancy has been provided in the Indian Constitution, and it states that, sir, when both the state laws and the central laws operate in the same field, and there is conflict between them, and there are no chances of conciliation between them, then the repugnancy arises. Okay. And are there any tests laid down by the supreme court to ascertain whether there is a repugnancy or not? So, can I take 2 seconds? Yes, sure.
I'm not able to recall right now. So sorry. Issues. Um, what are the different types of majority that has been that have been discussed in the Indian Constitution? So basically, three types of majority. That is simple majority. One is a special majority, and then other is a special majority by ratification of the states. Okay. Can you please highlight on this? What are Yes, sir. Simple majority, sir, where 50% of the members present and voting can vote, and that is a simple majority. It is under Articles 4, 169, and 239 AA. Whereas, sir, special majority is required for the amendment of provisions like sir, Chapter 4 of Part 5 and Chapter 5 of Part 6. And, sir, under the union lists and representations of the states in the parliament, so these require special majority and ratification by the half of the legislatures of the state. and And what's the special absolute majority, majority? the absolute majority, sir, so, sorry. Issues. What is the current scenario with respect to reservation and promotion? Um, the reservation in promotions has been provided under Article 16 of the Constitution. 16 4 4A talks about it with respect to consequential seniority. It has been provided under Article 16. Okay. And what is consequential seniority? So basically, consequential seniority says that if a reserved category person who later joined a position where a general category person was sitting, and he, because of reservation, is promoted earlier to the next post, and a general category person reaches there after that, though even though he in age is um, he is in age he's senior to the one who of reserved category, still sir reserved category person will be senior to the general category person with respect to that post. What is That is EWS consequence. reservation? So EWS reservation means sir where 10% seats are provided to the EWS category, that's economically weaker sections in the posts, And the sanction. do we have EWS reservation in MP Judicial Services? I'm sorry, I'm not aware of it. Okay. We don't have EWS reservation in MP Judicial Services. See, Thank you. coming to the freedom of religion, what is essential practices of religion? Yes, sir. The essential practices means those practices which a person who is professing a particular religion needs for its upliftment or not upliftment, basically to practice that particular religion, sir. Sir, and like establishing institutions and collection of the taxes for the promotion of religions and establishing institutions. And basically, sir, these all are essential religious practices. And sir, other practices also which might be provided in their scriptures as well to practice that. Shivani, Those are sorry, sir, what? Shivani ma'am will be asking further questions. So, hi, Harpreet, Hello, ma'am. can you tell me why you have chosen judiciary as your career option? What was the reason? So basically, ma'am, the reason is I am very much inspired and drawn towards the aura of a judge, the calm authority he has and the discipline and the respect of this role is, ma'am, what has attracted me towards becoming a judge and choosing judiciary as a career option, ma'am. Why you think this aura, this respect, and this kind of dignity you find only in judiciary, not into litigation, not into academics, or not into sports? Because you are a sport person as well. Why do you think that this is something which can only be found out in judiciary? Ma'am, according to me and in my opinion, ma'am, as you've mentioned in sports also, ma'am, each and every occupational job has that dignity. But ma'am, in my opinion, I found judiciary more drawn towards what my basic principles and values are aligned to.
So that is why, ma'am, I'm more What are drawn your towards basic it. principles and values that you think are aligned with judiciary? So, ma'am, I'm a person who is very much honest and hardworking, and I'm a person, ma'am, who remains very impartial, and I want to do something for the society. So, ma'am, I think that judiciary will be the most serving option for me. Don't you think doctors, soldiers are hardworking? Don't you think other professions, if we talk about legal fraternity, academics, JAG, any other profession, don't you think they're hardworking, they're honest, they're impartial with their work? Ma'am, each and every person is working hardworking in their profession, ma'am. But ma'am, according to me, I would be more serving in this profession, ma'am. I'm much drawn towards it, ma'am. I joined law school only with the purpose of becoming a judge, so ma'am, that is why. How do you think your honest attitude, your hardworking attitude is going to help you with judiciary? What are you going to do after getting selected? What do you think will be your work? Tell me. Ma'am, I will try to improve the working system by, ma'am, improving the working system, ma'am, because I will bring efficiency in my work and I will contribute 100% to what work has been assigned to me, and I will try my level best not to. I will try my level best, ma'am, to get rid of the pendency of the cases, and that will I be my think that is contribution. something which is expected from every other candidate. It's not something special that we'll be doing when a person goes into training, when a person gets selected. That's the first thing that is expected out of him. That's the part of their job. That is not something which is an extraordinary thing that has to be done from any candidate. That's the part Yes, of the ma'am. job. Yes, ma'am. But from, ma'am, my level, I will try to contribute 100% to this job. अच्छा हरप्रीत मुझे ये बताइए किसी एक सूट में कैन देयर बी नंबर ऑफ फाइनल डिक्रीज किसी एक सूट में एक से ज्यादा फाइनल डिग्री आ सकती है Ma'am, there can be preliminary decrees more than one, but final decrees is one only. आर यू श्योर अबाउट दिस Yes, ma'am. मुझे ये बताइए आप मल्टीफेरसनेस से क्या समझते हैं And multipariousness is there when there is misjoinder of parties as well as causes of action in a suit. That is multipariousness. कॉजेस ऑफ एक्शन कैन यू पार्डन Yes, ma'am. Multipariousness of misjoinder of parties and cause of action. Cause of action. ठीक है ठीक अच्छा मुझे ये बताइए आपने सेक्शन 25 पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बता सकते हैं उसके बारे में Yes, ma'am. Ma'am, Section 25 states that agreement without considerations are not void if they are made on account of natural love and affection, and that has been made in writing and has been registered. And agreements which are made for giving compensation to providing consideration for past voluntary acts and a debt which is barred by limitation law. There, अग्रीमेंट if there विदाउट is कंसिडरेशन हमें और कहाँ मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में विच आर वैलिड ma'am, agency. एनी अदर No, no, no. अच्छा मुझे ये बताइए कैन यू एक्सप्लेन मी सेक्शन 12 ऑफ एसआर इन शॉर्ट Ma'am, Section 12 of SRA talks about specific performance of the part of the contract, ma'am. Ma'am, general provision is that basically specific performance of part cannot be enforced. But ma'am, if there is a specific part which can be severed from the rest of the part and the part which must be left unperformed, the compensation of that part can be given, ma'am, so that part which is to be left unperformed, the court can compel its specific performance. If compensation for the one which is to be left unperformed can be given, ma'am.
And where, ma'am, the part which is to be left unperformed stands on a different and separate footing from the one which is to be left unperformed, then, ma'am, who can compel specific performance of its part. Otherwise, ma'am, it cannot be done. The specific performance of part of the contract. Okay, one last question from me. Does police report includes charge sheet and final report? And can you please pardon? Does police report includes charge sheet and final report? Ma'am, police report is itself a charge sheet or final report. Are you sure about this? Yes, ma'am. Ma'am, there are alternate names that I used. Okay. So we'll end your interview here. We'll start with the feedback, starting with Chandra sir. Okay. Before proceeding, where can we find the word charge sheet in criminal procedure? 173. Do they have actually used the word charge sheet? No, sir, I have not used. Okay. So ठीक है, इसको और आगे बढ़ाते हैं. Like when we submit a police report, it can either be a charge sheet or if the police finds that the Final. accused person has committed an offense, then the police will be submitting the police report, which will be a charge sheet. What if the police finds that there is no offense committed by the accused, and what do we call that police report? That is closure. Closure report. report. And what is a final report? FR? The final report. Sir, I'm confused. Okay. In neither in Sorry. BNSS nor in CRPC, we can find the meaning of the word charge sheet or final report or the closure report, but it is a police manual which uses police report, final report, closure report, charge sheet. So this can be asked in interview because Okay, if sir. we very frequently use the words charge sheet or closure report in the interview, then it is for sure that the panelists will be asking a question ki where can we find these two words? It is in the police manual. Okay. Uh, you you were pretty confident in this interview, what I can feel. थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन का इशू मेरे को लगा, थोड़ा सा फ्लैट गया. Probably it has been a long time you have revised these subject. That may be one of the reasons. Secondly, are you a practicing advocate? No, sir. No. And you got graduated in 2022. Did you enroll yourself? Yes, sir, I'm enrolled. And when did you complete the LLM? Sir, recently only, in the month of July. Yeah, with respect to this, your criminology LLM dissertation, वहाँ पे आपका LLM का dissertation था, but वो dissertation से जब मैंने Sir, questions पूछे, actually, the voice is cutting. now am I audible? Am I Break audible? हो रही है voice. Break हो रही है. There might be some issue with respect to network connectivity at your end. अब आ रही है आवाज? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो Yes, sir. थोड़ा सा डिसर्टेशन के ऊपर काम कर लीजिए, लाइक बीओएस टेक्निक वगैरह इन सब को लेके. कंपैरेटिव एनालिसिस जो आपने किया है उसको लेके भी आप थोड़ी सी कंफ्यूज सी हो गई थी. यूएसए में क्या है, यूके में क्या है. व्हेन आई केम टू सेंटर, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सो मच अबाउट सेंटेंसिंग, देन यू मस्ट बी अवेयर कि इंडिया में सेंटेंस हियरिंग का क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि आपने ही बोला इट इज यूज फॉर सेंटेंसिंग पर्पस. देन व्हाट इज सेंटेंस हियरिंग? सेंटेंस हियरिंग का प्रोविजन पता होना चाहिए. कोई मेरे को पहले से पता नहीं था कि आपका डिसर्टेशन का टॉपिक है. मैं तो आप ही के दिए हुए जवाबों से आपको आगे के सवालों में लेके आ रहा हूँ. तो दैट इज मैनोवरिंग ऑफ द इंटरव्यू. द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द होल इंटरव्यू विल बी ऑन योर हैंड्स. आप जहां पे उस गाड़ी को घुमाना चाहेंगे वहां पे गाड़ी घूम जाएगी और पैनलिस्ट आपसे वहां से क्वेश्चन पूछेगा. तो ये आप ही के. तो सेंटेंस हियरिंग थोड़ा सा पढ़ लीजिए. इसमें जस्टिस थॉमस की बहुत अच्छी ओपिनियन है विद रिस्पेक्ट टू नलिनी, राजीव गांधी असैसिनेशन केस. तो ये आपको पता होना चाहिए. लैंडमार्क जजमेंट है. ठीक है. तो योर होल आइडिया अबाउट योर हाइपोथेसिस इज कि यार ये सेंटेंसिंग में यूज हो सकता है, लेकिन नॉट विद रिस्पेक्ट टू कमिंग टू अ कंक्लूजन ऑफ जजमेंट, कन्विक्शन और अक्विटल, जो कि यूएसए की टेक्निक है.
तो इस पे थोड़ा सा काम कर लीजिए डिसर्टेशन पे। अदर देन दैट सीआरपीसी के प्रोविजन मोटा मोटी आपको क्लियर थे, लेकिन फिर भी सीआरपीसी पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन पे आए तो कॉन्स्टिट्यूशन पे क्लैरिटी थी आपको। मेजॉरिटी को लेके थोड़ा सा आप जो चीज़ रटी हुई थी आपने आर्टिकल तुरंत फेंक के मार दिए, बट रही बात जहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए थे, जैसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को लेके बात थी ये सब, तो जैसे ये रेटिफिकेशन वाली चीज़ है, वी कॉल इट स्पेशल मेजॉरिटी ओनली। मतलब इन सम टेक्स्ट यू कैन फाइंड इट टू बी एन स्पेशल मेजॉरिटी, क्योंकि वहाँ पे दो मेजॉरिटीज को मिक्स करके एक मेजॉरिटी बनाई गई है। तो जहाँ जहाँ आपको दो मिक्स मेजॉरिटी देखने मिलेंगी वो हम उसे स्पेशल मेजॉरिटी कहने लगते हैं। तो तो एक देन बार सर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यार, वो टू थर्ड इस वाली जो पे। चीज़ निकल के आती है ना, ओके सर, मुझे लग रहा था वो, बट फिर आई थॉट कि मैं वो सही होंगी कि नहीं, एंड फिर नहीं इसलिए नहीं नहीं, तो। नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलिए, अम, हरप्रीत, जैसे कि सर ने आपको बताया, तो ये कुछ इन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा ये, आपके आंसर्स आपने सही दिए, बेसिक्स आपको आते हैं, बट वेन एवर यू स्टार्ट गिविंग आंसर्स, स्टार्ट विद द सेट प्रोविजंस और सेक्शन। उसको हमेशा स्टार्ट ही ओके ऐसे करें, ठीक है, कि आपने ये ओके पर्टिकुलर, अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप पहले बताएं उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से, किस सेक्शन को, किस प्रोविजन को बिलोंग करता है। दूसरा, ओके। कीप अ स्माइल ऑन योर फेस ऑल्दो मैम यू आर आई वाज क्वाइट रिलैक्स्ड। नर्वस। हाँ, वो नर्वसनेस ठीक है, वो सभी को होती है ना, लेकिन मेनली जब आप इंटरव्यू में जाते हो, तो जब आपका बॉडी लैंग्वेज, जब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको जब देखा जाता है, तो आपका कंपोजर कैसा है, आप किस तरीके से क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो, ये सारी चीजें पार्ट होती है आपके आंसर देने, है ना। तो वहां पर अगर आप जितना ज्यादा रिलैक्स्ड हो, जितना स्माइल के साथ आंसर दे रहे हो, वो बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर आप ओके स्माइल मैम। करते रहोगे तो वो एक कंफर्ट जोन आपका बनाएगा जजेस के साथ। तो ओके मैम। वो फिर आपको हेल्प करेगा आंसर देने में, प्लस वो भी जब आपसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर आप ऐसे बहुत स्ट्रेट फेस के साथ आंसर दोगे, तो एक जो कम्युनिकेशन, जैसे सर बता रहे थे, बिल्ड होता है, वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो ओके कोशिश करना है कि आप रिलैक्स्ड हो। मैं जानती हूँ कि वो बहुत डिफिकल्ट होता है वहां बैठना जजेस के सामने और आंसर देना, बट स्टिल, मतलब अगर आप यहाँ तक आए हो तो प्री और मेंस क्लियर करके आए, तो बी कॉन्फिडेंट अबाउट। ओके और साथ में, व्हाई यू वांट टू बी अ जज, इस आंसर को चेंज करना पड़ेगा, है मैम। ना। मैम मैंने बहुत लोगों से पूछा है, एंड देन मेरे को कुछ उसका एक आंसर मिल नहीं रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं देन ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो, एंड सम आर सेइंग दैट यू वांट टू सर्व यार जस्टिस टू द सोसाइटी, स्ट्रेट सब बात फॉरवर्ड करो। या फिर जो कुछ भी हो, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी डिप्लोमेटिक, लेकिन इतना डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा कि सामने वाला आपको ग्रिल ना करे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, you can figure out certain qualities of a judge, like analytical skill होती है, like आप सीधे बोल सकते हो कि we had a lot of options, but जो analytical skills होती है, reasoning capabilities होती है, these I found to be like मेरे अंदर थी। और उस स्किल सेट के अकॉर्डिंगली जो एक जुडिशियल ऑफिसर के लिए भी रिक्विजिट स्किल सेट होता है, वो रिक्विजिट स्किल सेट मेरे अंदर है, तो मैंने उसकी तरफ अपने आप झुका बढ़ा लिया थ्रू आउट दीज मेरी ईयर्स। तो आप स्किल सेट के ऊपर बात करो, आप ये मत बोलो मेरे को न्याय करना है, मेरे को सोशल जस्टिस करना है। भाई एनजीओ खोल लो, नुक्ती पुड़ी बांटो, दिवाली आ ही गई है, तो दैट इज सर्टेनली समथिंग वेरी डिफरेंट। यू हैव टू टॉक वेरी डिप्लोमेटिकली, वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि यू हैव दिस स्किल सेट, तो आप कुछ ऐसे स्किल सेट बना लो एक जुडिशियल ऑफिसर के स्किल सेट की जो आवश्यकता है, और वहां पे बताओ कि यार आई पजेस दिस स्किल सेट, ठीक है। ओके और दूसरी चीज ये होती है कि ये तो स्किल सेट की रही बात, साथ ही साथ दिस जॉब कम्स विथ अ पर्सनल सेटिस्फेक्शन एज वेल। जॉब ओके सेटिस्फेक्शन तो है, एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी है। लाइक as far as my interaction goes with the judicial officers, this job is going to give me a personal satisfaction, which is very much necessary for 30 years down the line। मैं लगातार काम करते रहूँ। दूसरी चीज आपको किस चीज की आवश्यकता रहेगी वहां पे, पर्सनल सेटिस्फेक्शन तो अलग चीज हो गई, लेकिन फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, एक होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक होती है फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आप 5 लाख रुपए कमा रहे होगे, हो सकता है आपके पास वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी ना हो। वहां पे 5 लाख रुपए आप कमा रहे होगे, हो सकता है आप फाइनेंशियल सस्टेनेबल ना हो। लेकिन व्हेन यू आर अ जुडिशियल ऑफिसर, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट। आपके एकोमोडेशन, आपके बच्चों की फीस, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज, तो एक सस्टेनेबिलिटी है।
even at this amount of 1 lakh rupees, 1.5 lakh rupees, you will be able to sustain pretty well, which you won't be able to sustain although आप वहां पे उससे ज्यादा कमा रहे हो. तो एक आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिला, जॉब सेटिस्फेक्शन में आपको एक फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी मिली, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखने के लिए मिली. ठीक है, तो वो चीज आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगी. ठीक है, तीसरी चीज, जो चीज आपके लिए रहती है हमेशा, इट इज आइदर लिटिगेशन और लाइक बार एंड बेंच. तो व्हेन इट इज बार, तो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इनिशियल डेज ऑफ प्रैक्टिस में नहीं मिलेगी, आगे चल के बहुत अच्छी मिल सकती, बट करेंटली यू नीड दिस जॉब. ठीक है, आप उनको बताओ आई नीड दिस जॉब बिकॉज आई नीड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी सिक्योरिटी टू सपोर्ट माई फैमिली. तो आपने थोड़ी डिप्लोमेसी के द्वारा वहां लेके, फिर दूसरी चीज आप वहां पे ये बताओ कि ये फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी सिक्योरिटी तो ठीक ही है, बात अलग है हुई अपनी. हियर विच आई विल ऑल्सो बी एबल टू गेट टू लर्न इन लिटिगेशन. इधर पे मैं डेली बेसिस पे आई विल गेट टू लर्न फ्रॉम न्यू पर्सपेक्टिव्स. That will certainly enhance my skill set. That will certainly like help me out to learn new things. And वो मेरे लिए सीखते रहने की एक प्रोसेस जो मेरी एक हर मनुष्य का होता है वो बना रहेगा, जो कि शायद कॉर्पोरेट में आपके लिए नहीं होता. कॉर्पोरेट में क्या होता है कि आप हो सकता है कि शायद मर्जर्स एंड एक्विजिशन में लगे रह गए. आप अगर एलएलएम कर चुके हो, टीचिंग लाइन में गए होते, तो हो सकता है कि आप एक या दो सब्जेक्ट्स पे ही रिसर्च करते रह जाते. तो इट इज द बेस्ट थिंग इन व्हेन यू आर अ जुडिशियल ऑफिसर. आप लोग इतने रोजाना बेसिस पे इतने लोगों से इंटरेक्ट करोगे, आप इतने लर्नेड एडवोकेट से इंटरेक्ट करोगे कि जहां पे आपको सीखने मिलेगा उनसे. लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग. तो इस तरह से आप अपने आंसर को फ्रेम कर दो. ओके सर. ये मत बोलना सोशल सर्विस करना. तो सर ये जो मैंने आंसर दिया था ये और ये सब नहीं बोलना है ना मेरे को? नहीं यार, ये मतलब कि ये बताएगा कि सर ठीक ये है. मैंने किसी से पूछा ही था, तो जो आप पहले बोल रहे हो पहले वैसा था, तो मुझे बोला कि बहुत ही डिप्लोमेटिक है, ऐसा नहीं बोलना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो. तो फिर यार जब ये ये दो जो तीन आपने जवाब दिया दिया आंसर है जाता है सर. ना, लाइक जब ये जवाब दिया जाता है ना, तो जज भी सोच में पड़ जाता है. और जहां तुमने बोला कि और तो जज बोलेगा बेटा गाड़ी से यस उतरते टाइम सर. रोज रील बनाओगे क्या? लाइफ ऑफ अ जज. यस सर. सर वही दो तीन आंसर्स थे, मेरे को बहुत कंफ्यूजन था क्या बोलना है क्या नहीं इसमें. लाइक दिस वाज द आंसर व्हिच आई आल्सो गिव इन द इंटरव्यू, दोनों बार. ओके सर. एंड ओके दे वर सर. क्वाइट सैटिस्फाइड. इंटरव्यू में हमेशा अच्छे नंबर मिले. तो सर. समथिंग जो जेन्युइन रीजंस होते हैं, आप मतलब ये फेक नहीं हो सकते. साथ में मतलब इफ यू आर अ वुमेन कैंडिडेट, तो आपके पास एक और चीज होती है, एक जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन की बात करी है, तो आप उस पर्सनल सेटिस्फेक्शन को ये जोड़कर बोल सकते हो कि बीइंग अ वुमेन यू हैव सीन वुमेन जजेस सिटिंग इन कोर्ट एंड दे हैव इंस्पायर्ड यू. उनका वर्क ओके मैम. एथिक्स और जिस तरीके से वो एक जो डिग्निटी होल्ड करके बैठते हैं और जिस तरीके से समझते हैं उनके सामने जो पार्टीज हो, वो सेटिस्फेक्शन मिलना जरूरी नहीं है, मुझे हर फील्ड में मिलता है. तो अब ये कुछ चीजें हैं जो आप बता सकते हो जो फेक भी नहीं लगते, जो कहीं ना कहीं जेन्युइन भी लगते हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस को आप मतलब इस तरीके से आंसर करो. आई थिंक दिस वाज द ओनली मेजर थिंग विच आई फेल्ट. और जो करेक्शन से सर ने बता दिए हैं, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस व्हाइल आंसरिंग देम. ठीक है, अपने हैंड जेस्चर्स को कम यूज करना. और यस मैम. कोशिश करना कि जब भी आप आंसर दे रहे हो स्ट्रक्चर वे में लो, कहीं समझ में नहीं आ रहा है टेक अ पॉज. और कभी भी जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो वो क्वेश्चन हम क्योंकि हमसे लॉ के क्वेश्चन पूछे जाए, हमसे कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो डोंट यूज द वर्ड इन माय ओपिनियन. ऑलवेज यूज द वर्ड एज स्टेटेड इन द प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू करंट स्टेट ऑफ लॉ. हम हमेशा ये बोलते हैं, हम कभी भी लॉ के साथ अपना ओपिनियन नहीं जोड़ते, क्योंकि वहां पे हमारे ओपिनियन की कोई ओके वैल्यू मैम. नहीं. तो ना हमेशा आंसर को, और अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है विच इज क्रिटिकल या फिर कोई कंट्रोवर्शियल है, तो आप उसे भी एज अ थर्ड पार्टी ही आंसर करें. ओके मैम. ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू लॉ सिचुएशन ये है, तो आप बहुत बैलेंस करने के साथ बोलो, कभी भी माय ओपिनियन वहां नहीं जोड़ना. ओके मैम. और जहां आंसर नहीं आता है, अननेसेसरी आंसर करने के क्वेश्चन नहीं करने हैं, उसको ऐसे ही बोलना है कि सर अकॉर्डिंग टू माय बेस्ट नॉलेज दिस इज व्हाट आई कैन रिकॉल, आई विल रीड अबाउट दिस बुक. जहां पे नहीं आता है, सॉरी सर आई कुडंट रिकॉल, और ओके आगे मैम. बढ़ो. ठीक है, नहीं आ रहा है आंसर, उससे घबराना नहीं है. ठीक है, जैसे वो जुडिशरी वाला आप आंसर करे थे, उसके बाद थोड़ा सा आप नर्वस हो गए थे, और उसके बाद वो पूरा नर्वस वाला स्टेट आपका बाकी के आंसर्स में भी हाँ चला. मैम.
वो कुछ टाइम बाद फिर मैं मुझे वर्ड्स ही नहीं आते कि नेक्स्ट हाँ, फर्दर वर्ड क्या बोलना है। तो उस चीज से बचना है। कोई बात नहीं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया, आपका फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि वहीं से लोगों का ना जो इंटरव्यू है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो वो वही लोग वही लूज कर जाते हैं, जबकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आंसर आप दे रहे हो उससे आप कॉन्फिडेंट। अच्छा। ठीक है, तो ये भी जो फीडबैक हमने दिए हैं, ट्राई इम्प्लीमेंटिंग दीज इन योर नेक्स्ट राउंड, और फिर वहां पर देखते हैं कि हाउ दिस हैव बीन। ठीक है। मैम वन मोर क्वेश्चन। मैम ये बास्केटबॉल और ब्रिस्क वॉकिंग से रिलेटेड मतलब लाइक इज इट क्या मतलब मुझे फर्दर उसमें पढ़ना चाहिए और इसमें दो या जैसे चीजें। सर ने पूछा था पास टाइम एंड वो हाँ, थोड़ा। तो थैंक्स फॉर लाइक रिमाइंडिंग मी। हॉबी इज समथिंग विच इज वेरी कंस्ट्रक्टिव, लाइक रीडिंग बुक्स आपकी नॉलेज एनहांस करेगा। पास टाइम इज टाइम पास कर रहे हो, लाइक नेटफ्लिक्स एंड चिल, गेटिंग इट। तो व्हेन यूर लाइक, आपने अपने आंसर को, मैंने जब पूछा कि आप कैसे हेल्प किया होगा, तो आपने उसको बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में उसको बता दिया कि लाइक इफ आई डू ब्रिस्क वॉकिंग वो मेरी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा है। बट ठीक है, एक रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, जब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ा जाता है, मतलब दे विल गो थ्रू योर फॉर्म, आपके अंदर आने के 2-4 मिनट पहले उनको डेफ मिलता है। दे हार्डली हैव एनी टाइम टू गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द डेफ, honestly speaking, but they will for sure go to the last pointer, एकदम लास्ट पॉइंट, आई थिंक पॉइंट नंबर 21 होता है वो। they'll go through it और वहां पे आपका एक बार देख सकते हैं। तो हो गई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पीपल हैव मेंशन्ड प्रीवियसली, लाइक मेल कैंडिडेट्स हैव मेंशन्ड कुकिंग, तो इन द इंटरव्यू दे वर डिस्कसिंग कि खिचड़ी कैसे बनाई जाती है। दिस थिंग हैपेंड विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स, सिलेक्टेड कैंडिडेट। एक ने गार्डनिंग लिखा था। तो यस सर, मेरे भी फ्रेंड ने लिखा है। हाँ, तो it is up to you, how can you make it a constructive hobby of yours which you have very well made, but beware कि बास्केटबॉल के रूल्स पता होने चाहिए। लाइक ऐसा ना हो कि वो आपसे कोई ऐसा टेक्निकल रूल पूछ ले कि वो जज के बेटे खुद बास्केटबॉल खेलते हैं, रोज बास्केटबॉल के बारे में बात हो रही है घर पे, और आपसे पूछ ले डंक क्या होता है, ये क्या होता है, चलो ये तो बहुत कॉमन चीज हो गई, कोई फाउल के बारे में, टाइप्स ऑफ फाउल के बारे में बात कर ले, तो गो थ्रू इट, मतलब एक एक चीज पता होना चाहिए। ठीक है। ओके। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ठीक है, ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव बाय। अ नाइस डे। बाय बाय मैम। सेम टू यू।